वेलकम टू इग्नू वाला। यह असाइनमेंट इग्नू वाला द्वारा डेवलप किया गया है इन एसोसिएशन विद नीरज पब्लिकेशंस, जो पब्लिश करते हैं लार्जेस्ट रेंज ऑफ चैप्टर वाइज रेफरेंस बुक्स इंक्लूडिंग मेनी सॉल्व सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स फॉर वेरियस इग्नू कोर्सेज। नाउ let's start studying the assignment for the subject code MMPC-2 Human Resource Management. Read the following case study carefully. Infosys pioneered HR practices in the IT industry. Infosys is one of the India's largest IT services companies, renowned globally for its innovative solutions and strong corporate governance. This company has grown significantly over the years, both in size and global presence. So basically, इस paragraph को read करके we need to answer the given set of questions. Let's discuss the questions. Part A, Recruitment and Selection. Question number 1. Analyze the current recruitment and selection processes at Infosys. What are the strengths and weaknesses of these two processes? So basically from the paragraph we have to explain that what are the strength and weakness of the recruitment procedure in Infosys. Let's discuss the answer. Current recruitment and selection processes at Infosys. Strengths and weaknesses. Let's discuss the strengths first. Strengths include करता है diverse talent acquisition को. Infosys employ करता है a variety of recruitment channels जिसमें include होती है on campus hiring, lateral hiring, employee referrals and online job portals जो ensure करते हैं diverse talent pool को. ये emphasize करते हैं cultural fit को, जहाँ पे कंपनी एम्फसाइज करती है ऐसे एम्प्लॉयज को हायर करना जो अलाइन हो सके उनके वैल्यूज ऑफ इंटेग्रिटी, लीडरशिप एंड इनोवेशन के साथ, जो ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर कोहेशन को एनहांस करता है. स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू प्रोसेस. इन्फोसिस का रिगरस मल्टी स्टेज इंटरव्यू प्रोसेस है जो कि दोनों ही टेक्निकल और बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज पर बेस्ड है, इंश्योरिंग अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ हायरिंग. नेक्स्ट इज ग्लोबल प्रेजेंस. स्ट्रॉन्ग ग्लोबल फुटप्रिंट के साथ इन्फोसिस अट्रैक्ट करता है टैलेंट को अलग अलग जोग्राफी से, जो सपोर्ट करती है उसके बिजनेस ऑब्जेक्टिव को और एक कल्चरली डाइवर्स वर्कफोर्स को फोस्टर करती है. लेट्स डिस्कस वीकनेसेस नाउ. मतलब जो जो कमियां हैं हायरिंग प्रोसेस में, दैट वी विल डिस्कस. लेंथी रिक्रूटमेंट प्रोसेस. इनका प्रोसेस बहुत ज्यादा लेंथी है. मल्टी स्टेज इंटरव्यू प्रोसेस जो कि काफी टाइम कंज्यूमिंग है, potentially leading to the loss of top candidates to competitors offering faster decisions. Limited use of analytics, challenging in lateral hiring. Moving on to question number 2. Propose a comprehensive recruitment and selection strategy that could help Infosys attract and retain top talent. Include specific methods, tools, and practices that should be used. Let's discuss the answer. अगर हम इन प्रैक्टिसेस को इंक्लूड करते हुए एक्सप्लेन करें प्रपोज्ड कॉम्प्रिहेंसिव रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन स्ट्रैटेजी को, तो यहाँ पर इंक्लूड करते हैं रिक्रूटमेंट मेथड्स को. कैंपस हायरिंग विद अ फ्यूचर फोकस्ड अप्रोच. लिवरेजिंग एआई इन कैंडिडेट स्क्रीनिंग जो कि इंप्लीमेंट करता है एआई ड्रिवन टूल्स को टू ऑटोमेट द इनिशियल स्क्रीनिंग ऑफ रिज्यूमेज कैन सिग्निफिकेंटली स्पीड अप द रिक्रूटमेंट प्रोसेस. इन टूल से कैंडिडेट के डेटा को एनालाइज किया जा सकता है, स्किल सेट्स को और प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस को, जिससे टाइम स्पेंट कम होता है बाय मैनुअली शिफ्टिंग थ्रू एप्लीकेशंस. एनहांस करना एम्प्लॉय रेफरल प्रोग्राम को. एक्सपैंड करना स्कोप को. एम्प्लॉय रेफरल प्रोग्राम विद इंक्रीज इंसेंटिव्स हेल्प करता है टू टैप इनटू नेटवर्क्स ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय फॉर हाई क्वालिटी हायर्स. डाइवर्सिटी सेंट्रिक सोर्सिंग. एक इंक्लूसिव वर्कस्पेस के लिए इन्फोसिस को कंटिन्यू करना चाहिए टारगेट डाइवर्स टैलेंट पूल्स को, जिसमें विमेन इन टेक, वेटरन्स एंड अदर पीपल विद डिसेबिलिटीज भी इंक्लूड हो टू इंश्योर अ बैलेंस्ड वर्कफोर्स. नेक्स्ट इज सिलेक्शन टूल्स. Selection tools, behavioral assessment tools. Infosys should adopt advanced psychometric and behavioral assessment (Hogan or SHL) to measure candidate personality traits and cultural fit. Video interviewing platforms जो incorporate करता है AI based video interviewing tools जैसे कि HireVue और Pymetrics which use facial recognition and voice analysis और जो deeper insight provide कर सकता है candidate के behavioral tendencies और soft skills के बारे में. Next is retention focused strategies. Let's discuss question number 3.
Evaluate the existing training and development programs at Infosys. How effective are these programs in enhancing employee skills and performance? So basically we have to explain कि कैसे Infosys में ये तरीके के programs influence करते हैं, enhance करते हैं employee की skill और performance को. Let's discuss the answer. Evolution of existing training and development program. Infosys always recognize किया गया है अपने robust training program के लिए, especially through its World Learning and Development Center in Mysore, India. Company's investment in training ensure करता है कि employees को latest technology skills के साथ equip रखा जाए और leadership capabilities के साथ aware रखा जाए. Primary feature include करते हैं technical skill development को, leadership development program को, continuous learning culture को, global reach, alignment with business needs, limited customization को. Let's discuss next question. Design a new training and development plan tailored to the needs of Infosys. Explain the types of training programs, delivery methods, and how you would measure their effectiveness. Let's discuss the answer. Proposed training and development program. पहले डिस्कस करते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के टाइप्स को. टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इंक्लूड करता है पर्सनलाइज्ड लर्निंग पार्ट्स को, माइक्रो लर्निंग मॉड्यूल्स को, क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग को. लीडरशिप कोचिंग एंड मेंटरशिप प्रोग्राम जो कि स्ट्रक्चर्ड रहता है वन ऑन वन कोचिंग सेशंस के साथ फॉर हाई पोटेंशियल एम्प्लॉयज शुड बी एक्सटेंडेड पर्टिकुलरली फॉर मिड लेवल मैनेजर्स ट्रांजिशनिंग इनटू सीनियर लीडरशिप रोल्स. नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डिलीवरी मेथड्स को. ब्लेंडिंग लर्निंग. इन्फोसिस को एक कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए ऑफ इन पर्सन ट्रेनिंग, वर्चुअल क्लासरूम एंड सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन लर्निंग को, ताकि डाइवर्स लर्निंग प्रेफरेंसेस को मीट किया जा सके ग्लोबल वर्कफोर्स के साथ. Immersive technologies, gamification. इफेक्टिवनेस यदि हम मेजर करें तो ये इंक्लूड करता है पोस्ट ट्रेनिंग असेसमेंट को. रेगुलर असेसमेंट और सर्टिफिकेशंस कंडक्ट होने चाहिए टू इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और एम्प्लॉय स्किल एनहांसमेंट एंड परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस मेट्रिक्स. इन्फोसिस ट्रैक करता है परफॉर्मेंस improvement post training by linking the outcomes directly to KPIs जैसे कि productivity, project completion rate और client के satisfaction. Last and most important is the employee feedback. फीडबैक एम्प्लॉय से कलेक्ट करना रेलेवेंस के अकॉर्डिंगली इम्पैक्ट करता है ट्रेनिंग सेशंस को और हेल्प करता है इन्फोसिस को अपनी ऑफरिंग्स को रिफाइन करने के लिए. लेट्स डिस्कस पार्ट सी, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. Question number 5. Describe the current performance management system at Infosys. What are its key components and how well does it align with the company's goal? Let's discuss the answer. Current performance management system at Infosys. The performance management system, which in short is abbreviated as PMS, at Infosys एक multifaceted process है जो incorporate करती है दोनों ही individual और team based evolution को. Key components include करते हैं गोल सेटिंग को, 360 डिग्री फीडबैक को, एनुअल अप्रेजल्स को, डेवलपमेंट फोकस को, द सिस्टम फोकस ऑन बोथ इंडिविजुअल एंड टर्म बेस्ड टीम बेस्ड परफॉर्मेंस जो इंश्योर करता है अलाइनमेंट विद इन्फोसिस कोलैबोरेटिव कल्चर. हाउएवर वंस अ ईयर रिव्यू प्रोसेस सफिशिएंट नहीं होता रैपिडली एड्रेस करने के लिए चेंजिंग बिजनेस नीड्स को, और जिससे डिलेड फीडबैक रिसीव होता है जिससे एम्प्लॉय की ग्रोथ अफेक्ट होती है. Let's discuss next question. Recommend improvements to the performance management system. Discuss how these changes can improve employee motivation, productivity, and overall performance. Let's discuss the answer. Recommendations for improvement in performance management include करता है continuous performance feedback को. Infosys को shift करना चाहिए from an annual performance appraisal to a continuous feedback model जिससे managers को allow किया जाए to provide a real time feedback जो रिकॉग्नाइज करे अचीवमेंट्स को और परफॉर्मेंस गैप को एड्रेस करे प्रॉम्प्टली. क्लियरर करियर प्रोग्रेशन फ्रेमवर्क. पीयर रिकॉग्निशन प्लेटफॉर्म जिसमें पीयर टू पीयर रिकॉग्निशन इंट्रोड्यूस होता है जिससे एनहांस होती है एंगेजमेंट जो प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयज को एक अपॉर्चुनिटी के साथ टू सेलिब्रेट ईच अदर्स अचीवमेंट. इससे मोराल और रीइंफोर्स बूस्ट होता है और कंपनी का कोलैबोरेटिव कल्चर रीइंफोर्स किया जाता है. Data driven performance analysis. Infosys should leverage advanced HR analytics tools to assess performance data more effectively जो कि insight provide करे trends और areas के बारे में for better improvement. Predictive analysis could also identify high performance and potential attrition risk.
Question 7. Identify the main factors contributing to employee engagement and retention at Infosys. How do these factors impact the company's performance and culture? Let's discuss the answer. जो मेन फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं एम्प्लॉय एंगेजमेंट और रिटेंशन को एट इन्फोसिस दे इंक्लूड द वर्कप्लेस कल्चर किस तरीके का वर्कप्लेस कल्चर इन्फोसिस अप्लाई कर रहा है प्रोवाइड कर रहा है और कैसे इंटेग्रिटी इंक्लूसिविटी इनोवेशन फॉस्टर करता है वर्क प्लेस के कल्चर को जहां एम्प्लॉयज को वैल्यूड फील होता है और ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस के साथ कनेक्टेड रखता है career development opportunities. Infosys' focus on continuous learning and skill development is a key factor that keeps employees engaged and contributes to high retention rates. Work-life balance. कंपनी फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स प्रोवाइड करती है वर्क फ्रॉम होम के ऑप्शंस प्रोवाइड करती है और एम्प्लॉय वेलनेस प्रोग्राम्स एम्प्लॉय करती है जिससे एक हेल्दी वर्क बैलेंस बना रहता है बिटवीन द पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ इम्पैक्ट ऑन कंपनी परफॉर्मेंस एंड कल्चर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है कंपनी के परफॉर्मेंस और कल्चर पर इससे हायर प्रोडक्टिविटी मिलती है the employees tend to be more productive, innovative, and committed to achieving company goals, जिससे positively Infosys की performance regret करती है और relate करती है. Reduced attrition, high levels of employee engagement help करता है Infosys को lower attrition rates achieve करने में to industry peers जिससे cost save होती है related to hiring and training. Let's discuss question number 8. Propose strategies to enhance employee engagement and retention. Consider aspects such as workplace culture, employee recognition, career development opportunities, and work-life balance. Let's discuss the answer. Propose strategies to enhance employee engagement and retention. Strengthening workplace culture, employee involvement in decision making. इन्फोसिस को इन्वॉल्व करना चाहिए एम्प्लॉयज को स्ट्रैटेजिक डिस्कशंस में पर्टिकुलरली रिगार्डिंग चेंजेस इन बिजनेस डायरेक्शन इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स और न्यू प्रोडक्ट लाइन डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना Infosys should continue to champion diversity and inclusion by organizing diversity forums, cultural events celebrate करके और mentorship programs provide करके for underrepresented groups. Next is employee recognition. Enhanced recognition program जो introduce करता है more frequent and formalized employee recognition program को जैसे कि quarterly awards, employee of the month, accolades can enhance motivation. इससे employees के बीच motivation produce होती है. Career development opportunities, internal career mobility. Infosys को एक more structured integral job market encourage करना चाहिए जिससे employees को allow किया जाए to explore lateral or vertical career opportunities within the organization. Career roadmaps जो provide करता है clear career roadmaps offering guidance on how employee can progress to leadership position can enhance retention especially for mid-career professional and maintain work-life balance which is by providing flexible work arrangements and enhanced wellness programs. इस असाइनमेंट और ऐसे और इग्नू सॉल्व्ड असाइनमेंट्स को डाउनलोड करने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट ignowala.com। अब आप नीरज पब्लिकेशंस की इग्नू बेस्ड चैप्टर वाइज रेफरेंस बुक्स विद सॉल्व सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स पर पा सकते हैं अप टू 50 प्लस 15% एडिशनल डिस्काउंट की ऑफर। इस ऑफर को अवेल करने के लिए विजिट www.neerajbooks.com today। For more updates and information related to IGNOU, please subscribe and also comment below if you have any feedback and which assignment do you want to see next. Thank you for watching.